عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रदिल्लाह अन्हुमा से कि एक दिन एक आदमी ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खुलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगरज सबको सलाम करो। Narrated Abdullah bin Amr. A man asked the Prophet, "What sort of deeds or what qualities of Islam are good?" The Prophet replied, "To feed the poor and greet those whom you know and those whom you do not know." See Hadith number 27. Reference: Sahih al-Bukhari. Dwabaz in book. Reference: Book 2, Hadith 5, USC MSA Web, English. Reference: Volume 1, Book 2, Hadith Dwabaz.